आरजेएस परिवार के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, प्रोफेसर हरेंद्र शर्मा जदीची, अन्य वक्ता, यहाँ हमारे मित्र एक इन्वेस्टर है, कई वर्षों से हम लोग साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रमोहन है, हमेशा एक हंसी मजाक में बड़े विद्या की बातें कहते हैं, बड़े अच्छे टाइम। और अन्य जो हम वक्ता है सबको मेरा नमस्कार। श्रोता तो आजकल अदृश्य रहते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं अंग्रेजी में अपना भाषण करूं, मैं हिंदी में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। मैं वैज्ञानिक नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों के साथ मुझे मिलने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हुए। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी, जिनके नाम पे आज ये नेशनल साइंस डे है, और सीवी रमन, उनसे भी मैं मिला। और जब मैं उनसे मिला और मैंने नमस्कार किया और बधाई दी नोबेल प्राइज, भी कहने लगे, आई एम नाउ वेटिंग फॉर माय सेकंड नोबेल प्राइज फॉर द वर्क दैट आई एम नाउ डूइंग। देखिए, इतना कार्य करने के पश्चात भी, इतनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। वो नए कार्य को लगे होते और आशा रखते थे कि संभवतः उस नए काम के लिए भी उनको नोबेल प्राइज। उनसे भेंट हुई। तो दोनों सॉल्ट में वैक्सीन के इन्वेंटर हैं, उनके साथ मेरा काफी संबंध रहा। उनका सॉल्ट इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया, बहुत उनसे बातें इसके बारे में। कार्ल सेगन जो एस्ट्रोनॉमर हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, कॉस्मोस इत्यादि, उनसे हमारा बड़ा संपर्क है। इंडिया प्रिगोजिन जो बेल्जियम के बहुत बड़े नोबेल लॉरिएट हैं, उनसे मेरा संबंध रहा है। अपने प्रोफेसर सीवी नार्लिकर जो है, जो ऑयल नार्लिकर थ्योरी, उनका नाम प्रसिद्ध है उनसे। और भारतवर्ष में बहुत सारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, सबसे मेरा ये रहा है। तो इस अवसर पर मैं उन सबको भी अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। जो आपने विषय चुना है, पॉजिटिव एंड साइंटिफिक थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आई वुड लाइक पर्टिकुलरली to stress this question of positive thinking. As has been mentioned, we are in a very difficult situation in the world. When we look around us, it appears that everything is dissolving into chaos. प्राचीन स्थितियां लुप्त होती जा रही हैं, नवीन का जन्म नहीं हो रहा है, और त्रिशंकु की तरह हम मध्य में अपने आप को टंगे हुए पाते। We are in a very interesting and exciting position. It's a position of challenge, it's also a position of opportunity. So this is the sort of time when the world is going through a major crisis, not only a political crisis, an economic crisis, a psychological, spiritual crisis. This is the time that India can make. And I must say that one contribution that has already been made, and to that, Narendra Bhai Modi, I think, deserves full credit, and that is yoga. The International Day of Yoga, which he instituted in the United Nations, has in a way taken this great wisdom of India around them. Of course, yoga is very much more than just a physical exercise. Nonetheless, the concept of yoga has spread around, and so have the teachings of many of our gurus. Swami Vivekananda's words still reverberate around the halls. Your Windows extraordinary evolutionary thinking is becoming even more and more relevant as we move on in time. And of course, Vedanta is very, very important. And that is what I'm going to stress upon. वेदांत के जो प्रमुख विचार हैं, उनको लेके मैं विज्ञान के साथ उनको कुछ मिलवाने का प्रश्न। I have chosen some sutras which I will place before you. First one is from the Ishavasi. Ishavasi Idam Sarvam Yatim Jagatyam. That this whole cosmos is enveloped by a divine consciousness. Brahme vidumam tam ustat brahma prasad brahma dakshina stotrena adaschodham divrasitam
Brahma-Vidam Vishwam. So this all-pervasive Brahman implies that the creation of this cosmos was not only an explosion of light, not only an explosion of energy, also in some way an explosion of consciousness, which permeates it. Just yesterday, I came across a very interesting quotation. An article called "Does Consciousness Pervade the Universe?" was published in the prestigious Scientific American magazine with Professor Goff. And it says this: in our standard view of things, consciousness exists only in the brains of highly evolved organisms. And hence consciousness exists only in a tiny part of the universe and only in very recent history. According to the panpsychism, in contrast, consciousness pervades the universe as a fundamental feature of it. This doesn't mean that literally everything is conscious. The basic commitment is fundamental constituents of reality. Perhaps electrons and quarks have incredibly simple forms of experience. And the very complex experience of human or animal brains is something derived from the experience of the brain in the most people. So the concept that consciousness may be all-pervasive directly links with this Vedantic concept of Vishnavasi. And more now, consciousness research is becoming the cutting edge of inquiry, of research, particularly between science and philosophy. Because we are not talking of the old Newtonian dichotomous science, we're talking of the post-Heisenbergian, post-quantum mechanics science, where everything is dissolved into a flux. And there's the concept of the all-pervasive consciousness. The second sutra that I'd like to put before you is Ishvara Sarvabhutana Bhutesha. The Lord resides in the heart of all beings. Now, if consciousness is all-pervasive, then it obviously is within us also. And that is why the importance of developing our consciousness has become so. Allama Iqbal has a lovely share. खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे बताते ही बता. Raise your consciousness to such a level that before taking any decision, God Himself will ask for advice. That's one way of putting it. All means growth in the consciousness. And that all-pervasive Brahman, and within us is the Atma. So the Atma within each individual and the Brahman that is all-pervasive. These are two basic concepts of the Vedas. And joining these is what the spiritual quest is all about. How do we join our limited consciousness? That is also a challenge for science and a challenge for the spirit. Now there are four main parts of Atma Brahman को बढ़ाने के लिए चार प्रमुख मार्ग. There is the Jnana Yoga, the way of wisdom, way of clarity of thought, Tasat Viveka, distinguishing between the real and the unreal, the way of the Upanishads, shall we say, the way of Plato in the West, of contemplating Jnana Marg. Second is Bhakti Marg, the way of devotion. See, just by psychological or mental acrobatics, you cannot get to the divine unless your heart also love and affection for the divine. So in a way, if you are going to seek the divine, you're going to fall in love with it. You're going to open your heart chakra. While you have the mind, Jnana Yoga is the way of the mind, Bhakti Yoga is the way of the heart. And that is why we have so many options in Hinduism. You can worship a whole array of deities and devas. You can worship a formless God, a God with form. You can worship any form that you like. I myself am Shilpa. But that is my decision. This is the only religion that gives you a choice. You can worship. How you can worship. That is the second path, joining the Atma. The third
is Karma Yoga, way of the arm. Jnana Yoga, the way of the mind. Bhakti Yoga, the way of the heart. Karma Yoga, the way of the mind, heart, hands. You got to do something. In fact, the Ishavasi itself says, Purvani Karmani, Shatam Samaha, Devam Tvai Nana Churti, Karma Repeated. That's the second verse of these. People tend to forget. Even if you talk about Dana Chakrena, don't stress that the Upanishad itself says you are going to work here for 100 years. 100 years was the full span of life in the old days. But not every work is karma. There are a lot of evil things, a lot of cruel things. That's not karma yoga. Karma yoga is work dedicated to the divine. If you dedicate your works to the divine, then you can't do anything wrong. Because the moment you do something wrong, you realize that this is not something that you can dedicate to. Yet karma karo me tatta kadil sambho davada. Whatever I do, I offer. So, karma yoga, by offering our work to the divine, also then Viniti Bhagava can move towards. And the fourth way is the way of the breath. The way of the mind, Jnana Yoga, the way of the heart, Karma Yoga, the way of the Bhakti Yoga, the way of Karma Yoga, and the way of first thing we do when we are born is to breathe. The last thing we do before we die is also to talk of the last breath. So, breath is something with us throughout our life. We never pay attention to it. We take it for granted. But in breath itself, if we know the science of pranayama, then that itself will lead us. That is one of the great gifts to India to do. We don't ultimately have to look outside us. Just have to look inside us. That is where in final analysis. I would submit that the concepts of the Brahman, more pervasive, and the Atman in each, and the fourfold path of joining these two. Joining, the word yoga means to join. It comes from the English word yoke. Joining the Atman and the Brahman, that yoga. That is something that can get to what and I think there are four concepts which I wanted to put you, but are very important. Then I come to some important more concepts. Ekam Sat Vipraha Bhavita Vadan. Big way. Very important, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमारी संस्कृति का और हमारी सभ्यता का एक मूल मंत्र एकम सत विप्रह सच्चाई एक है उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग This is one why is called by many names. You can go on, many people talk about it, many prophets, many seers, many gurus have spoken about it, which means that we have not only got to understand that there are other paths, we have to respect it. That is the basis of the interfaith movement. Merchant spoke about the interfaith movement in which we are working. Now, the interfaith movement brings together people of different religious persuasions in a creative dialogue. Not in a Shastra जो था उसमें ये था कि कौन सा विजय होगा कौन इसमें तो विजय पराजय की बात people are coming together understand let us try and understand the other instead of going by these things which are in our mind and which we are perhaps you must understand what is behind what are the basic concept of these various things. And at present, as you may know, I am anchoring
a whole new series by Sanskrit TV on this Ekam Sat. We're taking each religion turn by turn and rejecting it. So this Ekam Sat Prabodhavanati is a very important concept. It's also from our Vedantic tradition. And leading on to that, there is another idea. Bahujana Sukhaya, Bahujana Hidaya. We work for the welfare of the many, happiness of the many. Not only for ourselves. What better definition of socialism, I ask? I asked my communist friends in parliament, my farewell speech, is there a better socialism definition? Bahujana Sukhaya, Bahujana Hidaya. Sarve ki sukhina santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit bhagave. Let everybody be happy, let everybody be healthy, let everybody witness beautiful sights, let no one suffer. I don't think anywhere in the world is there such a wide-ranging prayer, welfare of the entire. That again is something very central. And the final one that I want to put before you is world is a family. Ayam nija paro veti dharanam raguchitam udara charitanam. The mind that is all the small and narrow way of looking at reality. For those of the higher consciousness, the word itself is a family. This is a great concept. And today, where humanity is tearing each other apart, look what's happening in the West now. They thought they had solved all their problems, and all the problems in Asia is not true. They've again had a full-scale war in Europe. Unless we develop a concept of human unity, we're going to finally destroy this. See, there are two possibilities for the human. Arthur Koestler, who is an important European philosopher of the 20th century, holds the human race is a race programmed for self-destruction because of an engineering defect in the cortex, whereby the thinking and the feeling areas are not properly balanced. So while we know what is wrong, we do it. As Duryodhan says, Janami Satyam Dharme Niti Janami Satyam Dharme Niti. जानता हूँ सत्य क्या है, लेकिन मुझे उससे कोई आकर्षण नहीं लग रहा. मैं जानता हूँ कि असत्य गलत क्या है, लेकिन उसको मुझे आकर्षण करता है. So there's something wrong with the human brain, and ultimately we're going to blow ourselves up. And it's very possible now. So much nuclear weaponry on Earth. You have forgotten about the proliferation of nuclear weapons. Over the last 50 years, the nuclear weapons have grown tremendously. They've not been used yet. There's so much nuclear. How do you know where it will break out? North Korea, anywhere. You never know. So, that is Arthur Koestler's. Your Windows theory is the reverse. He says that the human race is a race programmed for evolution, and that we are going to evolve from man to spirit. Mano chetna se ati mano chetna jivan mein jana. That is inevitable, because the way we reverse from the oceans to the vegetable to the mineral to the animal to the animals, man is not the end product of evolution. Windows says man is an intermediate creature between the human. And our next step is to open ourselves to the higher kind. So here are two possibilities. I'm just putting these before you. It remains to be seen which one works out. The way things are now going, I must say, reminds me, the DTG, of a limerick. Limerick that I learned many years ago. It says, God's plan made a hopeful beginning. But man spoils his chances by sinning.
We know that the story will end in God's glory, but at present the other side will. So which side is going to win? It's going to depend upon all of us. Each one of us as individuals have a responsibility towards the human race and towards Dharti Mata. When you talk of science, the way we have destroyed this earth, we ravaged it, we decimated the forest. Thousands and thousands of species have become extinct. The air is polluted, the water is polluted, oceans are rising. Go to the Atharva Veda Bhumi Sukta. 63 verses of the Bhumi Sukta in the Atharva Veda provide the most integrated statement of environmental values that you would find in any scripture. So we have all these treasures with us. As PG said, we cannot simply look back on the past. We're proud of our past, some of our past. We're not proud of all of our past. Some of our past, we're proud of. But that's not good enough. We've got to make a contribution now and to the future. And we can make. India is one civilization that still has a major contribution to make to world. I'm sure that organizations like RJS Parivar, who are here, who work organizers, Professor and others, they are doing their bit by joining this with our AMRIT Mahotsav, our own 75th birth anniversary of the nation. Incidentally, this is the 105th birth anniversary of Sri Aurobindo. 150 वर्ष के हो जाएंगे, 75 वर्ष महाराष्ट्र 15 जुलाई और 15 अगस्त इसी वर्ष. इसमें हम this is an opportunity for us to restate our wisdom in such terms as are understandable to the modern, not in very archaic and difficult terms, but simply. Like I've tried to follow these sutras. I think if we follow these, we will be able to make our contribution towards helping the world. And what the divine plan is, we do not know. I said something in a talk on the Bhagavad Gita when the Prime Minister was there, which you may not have heard before. I said, if the divine needs us, if we need the divine also needs us. Without our cooperation, their work cannot be done. लेकिन सुदर्शन चक्र थे चला ले अर्जुन के पीछे पड़े रहे, खड़े हो जाओ, तुम्हारा धर्म है, मैंने पहले ही मान रखा है, सब क्यों? बिना मानव जाति के सहयोग से भगवान का कार्य भी पूजन या नई बात आप श्री राम ने जब श्रीलंका पे हमला करना था, अयोध्या से कोई नहीं आया उनकी मदद करने के लिए. वहां के जो वनवासी थे बड़े प्रगतिशील. दुर्भाग्य है कि उत्तर भारत के कवियों ने उनको वानर कह दिया. हो सकता है उनकी आकार ऐसी थे, उनके वस्त्र ऐसे थे, उनको वानर लगे. वानर नहीं थे वो. उन्हें बड़े बड़े शहर बनाए, किला बनाया था, पुल बनाए थे. और हनुमान जी जैसे महान योद्धा थे, प्रेमदाम वरिष्ठ, उनके सहयोग से ही श्री राम का कार्य हुआ. पहले उनके धनुष कितना भी धनुष चला देते, वहां से क्या होता नहीं चलता. इसलिए याद रखिए, क्योंकि हम मानव तो वहां से है ही नहीं बहुत, तब भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी, तब ज्यादा जिम्मेदारी. भगवान नहीं है तो हमें, और अगर भगवान है तब भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे सहयोग के बिना उनका काम. इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. आई एम रियली वेरी हैप्पी to be present on this meeting, express some of these views in language which I hope you and your audience understand. जी, आपका सम्माननीय महाराज डॉक्टर करण सिंह जी, आपके जो
उद्गार थे और आपका जो आज का जो बोधन रहा, आपका जो वक्तव्य था, वो हम लोग अभी तक हमारे कानों में उसकी जो मधुरता है वो अभी तक घुल रही है। और बहुत बहुत अब आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस मंच को बहुत बड़ी ऊंचाई दे दी हम लोगों को। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों के सोचने का जो पैटर्न है वो प्रभावित होगा, हमारी सोच प्रभावित होगी। आपने, मैं कहूंगा कि हम लोग बात कर रहे थे साइंस की, लेकिन आप हमें डीप साइंस पर ले गए। आप हमें उस साइंस की तरफ ले गए जिसके बारे में हम लोग अक्सर अपने फिजिकल दुनिया की तरफ ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आप हमें एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर ले गए। आप हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर ले गए, जिसका किस प्रकार से हमारे वेदांतों से, हमारी सनातन परंपराओं से, हमारे अध्यात्म से कैसा गहरा संबंध है, जिसकी तरफ आप हमें ले गए। मैं कहूंगा कि आपने हमें डीप साइंस से जोड़ा है, हमें साइंस की सीमाओं से भी हम आगे बढ़ सके आज इस विमर्श में। उसके लिए हम आपका गहरा आभार प्रकट करते हैं। आपने कितनी बातें कही, हमने आपका वो वीडियो भी देखा था। यहाँ पर लगभग हर व्यक्ति ने आरजेएस परिवार में वो वीडियो देखा है, जिसमें आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आप अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि उसी निरंतरता को आप और आगे आज के इस व्याख्यान में ले गए हैं, जो हम लोग इसको सदा सदा के लिए याद रखेंगे। कितनी बातें हैं जो आपने कही, जिनको मैं रेखांकित करना चाहूंगा। आपका संबंध भारतीय महान वैज्ञानिकों से, वहीं से आपने जो शुरुआत की कि किस प्रकार से डॉक्टर सीवी रामन के साथ में आपका संपर्क रहा, डॉक्टर नार्लेकर के साथ संपर्क रहा, और अनेक देशी विदेशी वैज्ञानिकों के साथ आपका संपर्क रहा। तो जो आपकी समृद्धि है आपके अनुभवों की, आप किस खूबसूरती से उसको हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं, हमारे शाश्वत ज्ञान से जोड़ते हैं, वो अद्भुत है हम सब लोगों के लिए। आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, इकोलॉजी की बात की, एनवायरमेंट की बात की, स्पिरिचुअलिटी को उससे जोड़ा, और आपने कहा कि जो हमारी जो परंपरा है, इस ईशोवास्योपनिषद हो या ऋग्वेद हो, उसमें जिस प्रकार से विज्ञान बीच बीच में कौंधता है, एक तरह से उसका प्रस्फुटन होता है। स्पिरिचुअल बातों के बीच बीच में कैसे विज्ञान आ जाता है, और हमें सहजता से संभवतः एहसास नहीं होता, लेकिन कितनी गहरी बातें उनमें कही गई है। उदाहरण के तौर पर जो आपने कहा कि क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस वाज नॉट जस्ट एन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, बट एन एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग, एंड कॉन्शियसनेस डायरेक्टली लिंक्स विद द वेदांतिक कॉन्सेप्ट। कितना गहरा नाता हमारी विज्ञान का हमारी परंपरा से है, वो हमको आपने उसके प्रति न सिर्फ अवगत कराया, बल्कि हमारे साथ ही सदैव के लिए हमारे साथ रहेंगी ये बातें। और कुछ बातें मुझे याद आती है जो मैं आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और उसके बाद प्राण के साथ में जो गहरा संबंध न सिर्फ इंसान का है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संबंध है, वो हम लोगों के लिए एक नई जानकारी रही। किस प्रकार से योग का अर्थ अहम और ब्रह्म को जोड़ने वाली एक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, वो आपने उसका जिक्र किया। और आपने जो बात कही जो मुझे बड़ी, मैं कहूंगा कि बहुत सुखद लगी, मतलब हम लोग जो समझते हैं कि दुनिया में इंसान अपने आप को कितनी बड़ी ताकत समझता है, लेकिन आपने कहा कि हम कहाँ पर हैं वास्तव में। मैन इज नॉट एक्चुअली द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट इज समवेयर इन बिटवीन। आगे क्या होगा दुनिया में, क्या नहीं होगा, उसको जाने बिना हम इंसान के तौर पर क्या कुछ सोचते हैं और कहाँ हम किस तरह की कल्पनाएं करते हैं। आपने परमाणु ऊर्जा का आपने जिक्र किया, विज्ञान ने क्या दिया, क्या हमसे ले रहा है, उनका जिक्र किया। तो जिस समग्रता में आपने ये जो व्याख्यान दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं क्या कहूँ, मैं तो तमाम बातों से आपकी मतलब ये हमारे कानों में शहद की थी, और मैं जोड़ सकता हूँ, मैं अपना जो बहुत सीमित ज्ञान है उसको आपके उद्गारों से यदि जोड़ूं तो मुझे याद आता है कि जो हमारा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो श्लोक है, जो हम ईश्वर की विशालता के संदर्भ में जिसका जिक्र करते हैं, वो किस प्रकार साइंस की जो कॉन्सेप्ट है अनंत की, उसके साथ भी जुड़ता है कि दिस इज द होल, फ्रॉम होलनेस इमर्जेस होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस स्टिल रिमेन्स। This is infinite, and this universe is infinite. The infinite proceeds from infinite, taking the infinitude
of the infinite, it remains as the infinite alone. तो ये बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं कि आपने जो कुछ कहा, और मुझे उम्मीद है कि आरजेएस परिवार ही नहीं, इसको चूंकि हम सोशल मीडिया पर भी डालेंगे तो अन्य लोग आपके इस अद्भुत व्याख्यान से लाभान्वित होंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और लोग प्रेरित होंगे। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आपका आभार। आपसे 2 आग्रह मैं और करूंगा कि हम एक चित्र लेते हैं, सामूहिक चित्र। तो उसके लिए मैं सभी हमारे प्रतिभागियों को भी आग्रह करूंगा कि अपना वीडियो कृपया आप ऑन कर दें, तो हम महाराज के साथ में एक चित्र ले सकें, हमारी यादों में इसको संजो सकें। और दूसरा, हमारा अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, उसका एक पोस्टर हम रिलीज करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में। तो 2 आपसे प्रार्थनाएं। बहुत आभार। तो कृपया सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि हम इस क्षण को कैमरे में उतार सकें और इसको एक स्लाइड में तब्दील कर सकें। तो वीडियो ऑन कैसे करना? जो वीडियो का निशान आपका कैमरे का निशान होगा, उस पर क्लिक करके आपका तो आपका ऑन है प्रोफेसर चंद्रमोहन जी, आपका ऑन है, आप दिखाई दे रहे हैं। मेरा भी ऑन है जी हाँ, सबका वीडियो कैसे ऑन करना? ऑन है, आपका ऑन है। अच्छा ठीक है, दिख रहे हैं आप ही दिखते रहे मुझे सारी। सब रीजन चंद्रमोहन ही मेरे सामने बना टॉपिक। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे उदय मन्ना जी अगले सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बैनर को कृपया दिखा दें, और सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी ये घोषणा करेंगे कि मैं इस बैनर को जारी करता हूं या रिलीज करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण सिंह जी का यहाँ पे आना। एक फैमिली को सकारात्मक भारत आंदोलन के अंदर भी ये सारे एपिसोड आएंगे, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और अब माननीय डॉक्टर करण सिंह जी उस बैनर को लॉन्च करेंगे जो कि सकारात्मक भारत उदय महिला सप्ताह जो चलेगा, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे महिलाओं को। और ये कार्यक्रम जो है अगले रविवार को होगा। हर रविवार आरजेएस वेबिनार हो रहा है आजादी की अमृत गाथा का, और इसमें सभी महिलाएं आप देख रहे हैं। ये सम्मान सकारात्मक भारत आंदोलन का है, आप सभी देख सकते हैं। आईएएस जो डॉक्टर रश्मि सिंह जी हैं, और इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की बीना जैन जी हैं, डॉक्टर मधु पंत जी राष्ट्रीय बाल भवन की जो निदेशक रह चुकी हैं, और डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, लेकिन बहुत ही सेवा का भावना रखती हैं। और ये कार्यक्रम जो है मॉडरेटर और कोऑर्गेनाइजर होंगी हमारे आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड की, जो कि बीएसएल महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर पुष्कर बालाजी। और आरजेएस फैमिली की राष्ट्रीय सम्मान जो हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम अवार्ड, महापुरुषों के नाम का एक अनूठी मुहिम चलाई गई है। 75 आजादी की अमृत गाथा होगी और 75 अवार्ड होंगे। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जो कि टीचर हैं और अपने माता पिता के स्मृति में उन्होंने अवार्ड घोषित किया है, वेलकम एड्रेस करेंगी। ये सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हैं। और प्रेम प्रभा झा जी इंदौर से रिटायर्ड टीचर हैं, मध्य प्रदेश से, और ये भी प्रदाता हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 की भेंट करता हैं। अगस्त में कार्यक्रम होगा और हम चाहेंगे कि इस बैनर को लॉन्च किया गया है तो अब ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी के उपस्थिति में ये लॉन्च किया जा रहा है। और मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि और हमारे क्वेश्चन आंसर अगर कुछ पूछना चाहें, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस और वोट ऑफ थैंक्स। बालेंदु शर्मा जी। जी मन्ना जी, तो आप सबका बहुत बहुत ये सभी महिलाएं जो है उस दिन उपस्थित होंगी, महिलाओं का, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। ये एक सकारात्मक भारत आंदोलन और आजादी की अमृत गाथा की एक मुहिम